chapter 9 chapter, the first 3 verses. Actually, the heading for these 3 verses is given as hearing, qualification and disqualification. So that means जो भक्ति है spiritual life का, उसके बारे में बोला हुआ है. The about bhakti, the second word Raj Vidya, Raj Guhyam, है ना, secret. And third verse tells about Krishna is telling those who don't worship me, they cannot reach. They are always in this birth and death, in the cycle of birth and death they will remain. ठीक है. So ये इसलिए इसको नाम दिया है qualification and disqualification, because in the purports also Srila Prabhupada tells about the Shravanam, Kirtanam, like that. Then 9.4 to 10 is referred as 9.4 to 10 is referred as Aishwarya Gyan. Okay? Krishna's relationship to the material world. In this we'll see that what is Krishna's position and what is material world's position with relation to Krishna. Then 9.11 to 25. Earlier, if you remember, Krishna had told about the 4 types of people who don't surrender unto him. So in those 4 types, the first one was Mudha. Namam Duskritino Mudha. Murkha Vyakti. So Krishna here, these verses, they are defining that Mudha. Mudha के बारे में बहुत कुछ है इसमें. And the glories of devotional service. ये जो part है, this part actually 26 to 34, it is called as Madhurya Gyan. ठीक है. So Aishwarya Gyan and Madhurya Gyan, ये दो चीजें इसमें important है. तो हम लास्ट में Madhurya Gyan, it is wonderful. So let us now start with our Aishwarya Gyan, that is 9.4. So if you remember yesterday, we saw 9.3 we have finished, in which Krishna tells that you will remember always in the one who will not worship him, or one who does not know him, he remains in this material world in the cycle of birth and death. The supreme personality of in this shloka, this shloka we have not read. We'll read. Krishna is telling in this part and in this verse and the next verse about his relationship with the material world, specifically explained. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are me, in me, but I am not in them. So, इसका meaning क्या है कि Krishna is present everywhere in his unmanifested form, okay, in the whole entire universe, and everybody is within him, but he is not within them. And he is not within them means he is not, he doesn't exist. ऐसा नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि Krishna does not exist. Okay, just a minute. So it does not mean that when Krishna is telling all living beings are in me and I am not in them, this does not mean that Krishna is not in the form of Paramatma. Now, is the screen visible now? Yes, Prabhu. Okay. So this does not mean that Krishna does not have a separate identity of himself existing other than this. Okay? He is there everywhere, because of him everything is there, but that does not mean he is not there. ऐसा भी उसका meaning नहीं होता है. So Srila Prabhupada tells in this purport that Krishna is not perceivable through gross senses. Gross senses से नहीं समझ सकते उनको. Krishna के name, fame, pastimes, etc. they cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. Krishna is revealed. किसको? So one who is engaged in pure devotional service. सेवन मुखे ही जीवा दो. सेवा जो कर रहा है, ठीक है, स्वयं एवं स्फूर्ति आता, उसको स्फूर्ति आती है. He comes to know. To him Krishna is revealing. ठीक है. In Brahma Samhita it is stated, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. One who can see the supreme personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself, if one has developed the transcendental loving attitude towards him. Who can see?
if one has developed transcendental loving attitude for him. But for people in general, he is not visible. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Inconceivable. Krishna is inconceivable. This is indicated here by the word avyakta murtina. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. So a wonderful example Srila Prabhupada is giving, that sunshine is existing everywhere. Like for example, we say हम अगर किसी रूम में है तो हम क्या बोलते हैं, we say सूरज आ रहा है क्या, चमक रहा है क्या, है ना, सूरज आ रहा है क्या, या सूरज आ गया है, अरे सूरज आ गया है, आंखों पे सूरज आ रहा है ना, सनलाइट आ रहा है. So actually sunlight, Suraj is actually, sun is not present on earth, but in the form of sunlight, sun is present on the earth. You know? So similarly, Krishna is present everywhere in the form of his energy. 7th chapter में हमने दो एनर्जी देखे थे लॉर्ड के. कौन से एनर्जी? एक देखा था इंफीरियर एनर्जी और एक है सुपेरियर एनर्जी. ठीक है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति. अंतरंग यानी सुपेरियर शक्ति है और बहिरंग यानी inferior material energy. Similarly, sun की तरह लॉर्ड भी हर जगह पे प्रेजेंट है in the form of his energies. But now some foolish people, what they will say that because God is spread all over, he has lost his personal existence. ऐसे भी लोग हैं. अभी वो क्या बोलेंगे, ओके ठीक है, हाँ भगवान हर जगह पे है ना, इसका मतलब भगवान और कहीं पे नहीं, वो हर जगह पे स्प्रेड हो गए. जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पानी का ग्लास है, वो ग्लास मैंने डाल दिया जमीन पे, तो क्या हो गया, वो पानी क्या हो गया, हर जगह पे हो गया. अभी ग्लास में पानी है क्या, नहीं है अलग से. तो भगवान का ऐसा नहीं होता, दैट ही स्प्रेड एवरीवेयर, दैट मींस ही हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी. This doesn't happen. That's why Krishna is telling, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. अगले वर्ष में है तो भगवान क्या बोलते हैं, I am still aloof. ये सबसे मैं अलग हूँ. पहले भी बोला है कृष्ण ने, I am aloof from this material world. हूँ भी लेकिन अलग भी हूँ. ये मुझसे, ये सब चल रहा है मेरी वजह से, मगर मैं इससे अलग हूँ. Krishna is having his own form. Srila Prabhupada gives another analogy of a king. See, king है, king के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं, लेकिन किंग हिमसेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम दोस डिपार्टमेंट्स. ही डज नॉट इंटरफेयर इन एवरी डिपार्टमेंट, but at the same time all these department they are working because there is king. So similarly, God is there, God के सारी चीजें, everything is working under him, but actually he need not be there doing all the things. ठीक है, but still one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. Similarly, all the manifestation that we see and everything that exists both in material world and spiritual world are resting on the energy of the supreme personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of his different energies, and as stated in Bhagavad Gita, विस्ता भ्याम भयाम, यानी विस्तार बोलते हैं ना हम लोग, विस्ताभ्या हम idam krishnam. He is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. समझे एग्जांपल आपको, जो एनर्जी वाला हर जगह एनर्जी के फॉर्म में, he is there everywhere. Then Krishna is telling, and yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. तो एक कोई पागल हो जाएगा कि समझे, if somebody does not know the various forms of Lord, he will get bewildered, he will not understand. ठीक है. So see, when Lord is telling that I am not within them, I am different, that means he has a separate form. And when he's telling everything is within me, that means he is telling about his Vishwarupa form, that is everything within him. So he is there, but he is not there. Everything is within him, but at the same time he is not within that. He has his own separate body. He has his own separate himself. He is separate. Okay? The Lord says that everything is resting on him. This should not be misunderstood. Okay? The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of the material manifestation. लोग क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान सब कुछ कर रहे हैं, तो ये किया वो भी भगवान ने किया, मेरे साथ बुरा किसने किया तो भगवान की वजह से किया, ऐसा बोलेंगे. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वैसा नहीं समझना चाहिए कि ही इज डायरेक्टली डूइंग इट. ठीक है, समटाइम्स वी सी अ बिग पिक्चर ऑफ एटलस.
holding the globe on his shoulder. He seems to be very tired holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding his created universe. So Krishna को ये सब नहीं करना पड़ता आपको. इसे ना that इसके साथ बुरा हुआ, उसके साथ अच्छा हुआ, तो किसी के साथ बुरा हुआ तो God is not doing this. Is his energies are working. And under his energy, like the karma cycle is happening. जो कर्मा हो रहा है, कुछ किसी के साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो उसके कर्मा के हिसाब से. We should not say this is because God has done this. Although karma, everything is made by God, but we are suffering because of our own deeds. And how we will work, whatever we do, karma here in this world, accordingly in future also we will get. If you do good, we will get good. If you do bad, if you get bad, like that. So he is not personally doing this. So here example of Atlas comes. I'll just show you Atlas. ये देखिए एटलस. दिस इज ग्रीक माइथोलॉजी में आता है. एटलस करके एक आता है, ठीक है. एटलस करके गॉड देवता है. वो क्या करता है, वो पूरी पृथ्वी को उठाया हुआ है, ऐसा उसकी एनर्जी पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा एक इसको बोलते हैं माइथोलॉजी. समझे? माइथोलॉजी यानी क्या होता है, जहाँ पे फेंका फेंकी है जिधर. तो गॉड इज नॉट लाइक दैट. कृष्णा इज नॉट लाइक दिस कि उनको उठाना पड़ता है सब और ताकत लगा कि गॉड दिन रात काम कर रहे हैं. अरे इनको खाना नहीं मिला, इनको खाना मिला, अरे इनको ये, अरे उधर वो करो, अरे वो माउंटेन गिर रहा है, अरे वो सुनामी आ रहा है, अरे उधर अर्थक्वेक आ रहा है. ये लॉर्ड को ऐसे जाके हर जगह पे करना नहीं पड़ता है, कोई चीज होती नहीं है. हिज एनर्जीज आर वर्किंग लाइक सिमिलर लाइक अ CEO is there in some company. That CEO is working separately. He creates the company. Company में कौन है, तो company, he is different from the company. He creates it. And company में कौन है, तो managers है, ये है, वो है, board of director है, उनके अंडर workers है, ये है, वो है, assistants है, बहुत सारे लोग हैं. All those people, they are working and they are taking care of the company, and company is running nicely. Manager where is, और manager ने CEO where is, he is enjoying somewhere outside. ठीक है, वो कहीं घूम रहे हैं, कहीं इधर से उधर, ये बीच से वो बीच जा रहा है, ये हिल स्टेशन से ये कंट्री से वो कंट्री घूम रहा है. ठीक है, तो like this ऐसा. So similarly Krishna also creates this world, but that does not mean Krishna has to personally work out here. अरे बरसात नहीं हो रहा, चलो पानी, अरे ढको फूको, आगे जा, फिर तो आगे जा, उधर पानी दे, ऐसा नहीं होता. He is not working like that. His energies are working. And similar is about our karma also. Our karma we are creating. Krishna is not forcing anything on us. That is because of our karma, our works, we are getting all the things. Okay? So the planetary systems, Krishna is telling, he is, although everything is resting on him, he is aloof. वो अलग है. The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. But he is different from space. He is differently situated. Therefore, the Lord says, although they are situated on my inconceivable energy as the Supreme Person of Godhead, I am aloof from them. This is the inconceivable opulence of the Lord. ठीक है? Although they are situated on my, मेरे inconceivable energy से situated है, लेकिन मैं उससे अलग हूँ. This is the inconceivable opulence of the Lord. He is separate from it. अलग है वो. ठीक है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में वो एटलस है, वो अलग है. वो क्या, उन्होंने माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी यानी मिथ यानी फेक होता है. ठीक है, झूठा या मन से बनाया हुआ. तो वो वैसी माइथोलॉजी बनाई है, वैसा एक देवता है, बट एक्चुअली सच थिंग डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. In the Nirukti Vedic dictionary, it is said the Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying his energy. His person is full of different potent energies, and his determination is itself actual fact. In this way, the personality of Godhead is to be understood. उनके अलग अलग एनर्जीज, वो फुल ऑफ एनर्जी है, और एंड इज डिटर्मिनेशन इज इटसेल्फ एक्चुअल फैक्ट. यानी उनका जो डिटर्मिनेशन है वो फैक्ट है, वो रियल है. यानी हमारे कैसे एक अलग चीज होता है डिटर्मिनेशन करना, और कोई चीज अलग करना है, लेकिन डिटर्मिनेशन इज द फैक्ट. यानी वो उनका जो डिजायर है या जो चीज है, वो ये यूनिवर्स है, ये सब कुछ पूरा क्रिएशन है. दैट इज हिज डिजायर, और वी कैन से हिज डिटर्मिनेशन, एंड दैट इज एक्चुअली फैक्ट. और उनके एनर्जी से चीजें चलती है. हिज एनर्जीज आर परफॉर्म. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू मूव समथिंग, आई हैव टू फोर्स इट. मेरा एनर्जी उसको लगाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा एनर्जी लगा के मैंने उसको क्या किया, मूव किया. यानी मेरा डिजायर क्या किया, मैंने वर्कआउट किया विद द हेल्प ऑफ माय एनर्जी. सिमिलरली हिज डिटर्मिनेशन और हिज डिजायर, he works out by his energy. So similarly, this whole world is working out by his energy, by the desire of God. Even in Bible it is said that Lord created this world, something like just he thought, let there be creation.
and there was creation, ऐसा करके कुछ लिखा है बाइबल में मोस्टली. So he thought about creation and let there be creation and there was creation, ऐसा होता है. He doesn't have to personally make this whole earth. ब्रह्मा जी को उठाओ और ब्रह्मा जी ये देखो डूब रहा है, इसको बचाओ, ऐसे. He doesn't have to do this. ठीक है. We may think of doing something, but there are so many impediments and sometimes it is not possible to do as we like. But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. ठीक है. जब Lord he desired that when Krishna was in Mathura and he desired that now Mathura पे ये सब लोग अटैक करें इधर उधर से, let there be द्वारका. ठीक है, द्वारका होना चाहिए. ऐसा करते हैं तो इमीडिएटली है ना समुद्र से एक ये ऊपर आ जाता है, समुद्र से एक लैंड आइलैंड आ जाता है ऊपर. ठीक है, 150 किलोमीटर उसका ये रहता है डायमीटर कुछ. तो इतना बड़ा एक आइलैंड है और वो आइलैंड ऊपर आ जाता है और फिर विश्वकर्मा वहाँ पे क्रिएट भी कर देते हैं पूरा सब कुछ. द्वारका पूरा बन जाता है. ये सारे जो मथुरा के लोग हैं सब लोग द्वारका में शिफ्ट हो जाते हैं विदिन वन नाइट. ठीक है, उसी रात को मथुरा में सोते हैं, सुबह उठ के देखते तो किधर है, द्वारका में. ऐसा हो जाता है सिचुएशन. सो एवरीथिंग इज शिफ्टेड लाइक दैट. सो दैट इज कृष्णा. हिज डिजायर, जस्ट ही डिजायर्स एंड एवरीथिंग मैनिफेस्ट्स. उनका एनर्जी सब चीजें करता है. The Lord explains this fact. Although he is maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation. वो मेंटेन करते, सस्टेन करते, लेकिन वो टच नहीं करते. सिंपली बाई सुप्रीम विल, उनकी इच्छा, उनकी विल से एवरीथिंग इज क्रिएटेड, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड, एवरीथिंग इज मेंटेन एंड एवरीथिंग इज एनहिलेटेड. सब खत्म भी उनकी इच्छा से होता है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज माइंड एंड हिमसेल्फ. उनका माइंड और वो, ऐसे उसमें डिफरेंस नहीं है, एक ही है. यानी माइंड अलग, हमारा माइंड अलग है, हम अलग है. माइंड कुछ अलग बोलता है, हम कुछ अलग बोलते हैं. सो ये वहाँ कृष्णा केस में ये नहीं होता. Just a minute. He is absolute spirit. Simultaneously, the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how he is also present personally. हर जगह पे है. हमने we have heard this in India that भगवान हर जगह पे, Krishna is present everywhere, God is present everywhere. But then such people they cannot understand this. When they say God is present everywhere, they feel that God खुद क्या है, खुद एक पर्सन के रूप में कहीं ना कहीं है. ऐसा समझ नहीं पाते एक्चुअली. वो ऐसा वो क्या समझते हैं कि सब जगह फैले हुए. ठीक है, गॉड का लेकिन फॉर्म है, ये समझ नहीं पाते वो. ठीक है, गॉड का फॉर्म है, जैसे कृष्ण का फॉर्म है, 2 hands 2 legs, है ना. दैट ऐसा जो फॉर्म है कृष्ण का, जैसे हमारे फॉर्म बॉडी, ह्यूमन बॉडी जैसा कृष्ण बॉडी, बट दैट इज एक्सक्लूसिव ब्यूटी है वो. वी कैन नॉट इवन इमेजिन. एवरी पार्ट ऑफ लॉर्ड्स बॉडी इज सो ब्यूटीफुल. तो उनका डिस्क्रिप्शन वैदिक शास्त्र में आता है. तो वहाँ हम अगर देखते हैं वो ब्यूटी और नॉर्मल किसी का ब्यूटी है, बहुत डिफरेंस है. ठीक है, देयर इज नो कंपैरिजन ओनली विद इन ब्यूटी ऑफ लॉर्ड एंड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. सो to understand this that he is present in a form, ये बहुत लोगों को नहीं समझता. They cannot understand. Common man cannot understand that he is also present personally. He is different from man material manifestation, yet everything is resting on him. ये भी नहीं समझ सकते कि वो इस material manifestation से अलग है. ठीक है, ये material world से अलग है, but still everything is resting on him. उन पे सब कुछ रह रहा है. This is explained here as Yoga Aishwaryam, the mystic power of Supreme Personality of Godhead. ये भगवान का योग ऐश्वर्य है, उनसे होता है सब कुछ क्रिएशन. Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. ये बहुत एनालॉजी दिया है कृष्ण ने समझाने के लिए. एनालॉजी व्हेन वी गिव एनालॉजी, व्हेन द टॉपिक इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, देन बाय एनालॉजी वी कैन एक्सप्लेन द टॉपिक. हम उसको समझा सकते हैं एनालॉजी से. सो कृष्ण यहाँ पे एनालॉजी से समझा रहे विंड का. ठीक है, लाइक माइटी विंड हर जगह पे ब्लो होती है. ठीक है, इट रेस्ट्स ऑलवेज इन द स्काई. वो हर जगह ब्लो भी हो रही है. ठीक है, मगर वो कहाँ है, तो स्काई के अंदर है. ऑल क्रिएटेड बीइंग्स रेस्ट इन मी. आपको ये एग्जांपल समझा होगा तो देखिए कि स्काई है. श्रील प्रभुपाद जी बता रहे स्काई क्या है, बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है. ठीक है, सबसे बड़ा है. और विंड और एयर भी बहुत बड़ा है. ठीक है, अभी विंड भी अनलिमिटेड है, स्काई भी अनलिमिटेड, लेकिन ये विंड क्या है, विंड को स्टिल कौन पकड़ के बैठा है,
स्काई के अंदर है विंड, ठीक है, विंड स्काई के बाहर नहीं है। तो उसी प्रकार से बोला गया है कि ये सारा मैनिफेस्टेशन है, ये सब सबॉर्डिनेट है गॉड को, ठीक है। और जैसे बोलते हैं श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ supreme personality of Godhead. This does everything is moving under His will. उनके इच्छा से सब कुछ चलता है. By His everything, by His will, everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated. उनकी इच्छा से सब हो रहा है. Still, He is aloof from everything, as the sky is always aloof from the activities of the wind. ठीक है, फिर भी वो अलूफ है, उससे अलग है. He is separate from that. ठीक है, He creates and He is separate from that. In the Upanishads, it is stated, Yad Vishavata Pavate. It is out of the fear of the Supreme Lord that the wind is blowing. ये तैत्तिरीय उपनिषद का, ठीक है. बृहदारण्यक उपनिषद क्या बोलता है इस वर्ष से रिलेटेड, बोलते हैं कि by the supreme order, under the superintendence of the supreme personality of Godhead, the moon, the sun, and other great planets are moving. ठीक है, तो ये क्यों मूव कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स, ये सब चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ कृष्णा. मत भयात तापिवातोयम सूर्यस्तपति मत भयात. लॉर्ड कपिला भी बोल रहे कि मेरे भय से, बिकॉज आउट ऑफ फियर ऑफ मी और आउट ऑफ माय फॉलोइंग माय रूल्स माय डिसीजन, व्हाट वी से, द तापोवातोयम सूर्यस्तपति मत भयात. सारे एयर मूव कर रही है, सूर्य तप रहा है. किसके वजह से तप रहा है? उनको कोई काम किसने दिया? तो ये दिस इज द what we say, work given to them by God. In Brahma Samhita, it is stated that Yat Chakshuresha Savita Sakala Grahana. Yeah, we'll just read the translation. This is the description of movement of the sun. The sun के बारे में it is said that sun is considered to be one of the eyes of the Supreme Lord, and that it has immense potency to diffuse heat and sunlight. It is said sun के पास इतना एनर्जी है कि जो एनर्जी सन रिलीज करता है हम वो यूज भी नहीं कर सकते. आज तक हमने यूज नहीं किया है. एक सेकंड में सन जितना एनर्जी रिलीज करता है, इतनी एनर्जी सन से रिलीज होती है, लाइट और हीट. Still it is moving in its prescribed orbit by the order and the supreme will of Govinda. Still इतना पावरफुल सन है, वो किसके व्हील से घूमता है? तो कृष्णा के व्हील से घूमता है, ठीक है, उनकी इच्छा से. So from the Vedic literature we can find evidence that this material manifestation, which appears to be very wonderful and great, is under the complete control of the Supreme Personality of Godhead. This will be further explained in the later verses of this chapter. ये सब कुछ कृष्णा के कंट्रोल में होता है, कृष्णा के हाथ में होता है, but still he is separate. Okay, let us move to the next verse. O son of Kunti, at the end of millennium, all material manifestation enter into my nature, and at the beginning of other millennia, by my potency, I create them. सब खत्म हो जाता है तो वो गॉड के अंदर से जाता है, बाद में गॉड ही फिर से उसको क्रिएट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हमने देखी है, बेसिक्स. फर्स्ट वन, God is the creation, maintainer, and annihilator of this material world. ठीक है. At the end of millennium means at the time of Brahma. अब ब्रह्मा के बारे में बताया कुछ चीजें, ठीक है. ब्रह्मा के बर्थ से डेथ तक का क्या क्या है, एक दिन कैलकुलेट किया ब्रह्मा का तो इतना करोड़ अर्थली ईयर्स होता है. हाउ मच इट इज, कैन एनीबॉडी कैलकुलेट? 43 करोड़. 430 करोड़, ठीक है, 430 करोड़ ऑफ आवर अर्थली ईयर्स. इतने ईयर्स है, हमें कैलकुलेट करने को डिफिकल्ट जा रहा है. वो ब्रह्मा का डे है. His night is also of the same duration. His month consists of 30 such days and nights, and his year of 12 months, 12 महीने का ईयर है, और वो 100 years में मरता है. ठीक है. So after 100 such years, when Brahma dies, the devastation or annihilation takes place. This means that the energy manifested by the Supreme Lord is again wound up in himself. Then again, when there is a need to manifest the cosmic world, it is done by his will. Bahusham. Although I am one, I shall become many. Krishna is telling. Okay.
Then again, when there is need to manifest the cosmic world, it is done by his will बहुत शाम. Although I am one ये हो गया ठीक है. It's like same चीज वही चीज हम लोग वही पढ़ रहे हैं. He expands himself in this material world, and the whole cosmic manifestation again takes place. So, from these verses which we have seen, we understand that Krishna is separate from this world. At the same time, his energies are working on which everything is resting. Okay? Now, in this verse, next verse, the whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again, and under my will, it is annihilated at the एंड. सो ये कृष्णा बता रहे हैं उनका पोजीशन. ये जो मटेरियल वर्ल्ड है या जो क्या कहते हैं उसको क्रिएशन है, ये क्रिएशन को ही कैन डू, ही कैन फिनिश इट एट द सेम टाइम ही विल कंटिन्यू इट. तो कब तक वो एनिलेट नहीं कर सकते सबको, कब तक खत्म नहीं कर सकते, एनीबॉडी कैन टेल. जब तक भगवान की इच्छा ना हो. भगवान खुद की इच्छा ना हो, उनको कोई रोक नहीं सकता, कभी भी खत्म कर सकते हो. लेकिन नॉर्मली ब्रह्मा का लाइफ स्पैन के हिसाब से होता है, तो ब्रह्मा जी के हिसाब से जब खत्म होता है, तब ब्रह्मा जी का डेथ जब होता है तो उस समय सारा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाता है. सो अंडर माई विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन. उनके विल के अंदर और उनके इच्छा से वो चालू मैनिफेस्ट होता है, बनता है और एनिहिलेट यानी खत्म भी होता है. So this verse and next two verses, 9th and 10th, we will take in our next class. We shall end now.